नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, जो आज का टॉपिक वो है चेक पर की कटिंग तो नहीं चलेगा केस। ये एक लेटेस्ट जजमेंट आई है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और ये एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट आई है इस इशू पे। और इस पे जो है काफ़ी डिटेल में लॉ और एक्ट के प्रोविज़न को जो है डिस्कस किया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जजमेंट आप लोगों के काफ़ी काम आने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि आप इसके लिंक को सेव करें, और अब मैं जो है आप लोगों के लिए जो है इसका एक डाइजेस्ट ऑनलाइन भी तैयार करूँगा। प्लस आप लोगों के लिए एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली है, जिसके तहत मैंने ये बताया है कि किस तरह से आप लोग अपना डाइजेस्ट खुद बना सकते हो। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फीडबैक तो आप प्लीज़ ज़रूर दें मुझे हर वीडियो पे कि क्या है, कैसा बनी है वीडियो, क्या इसमें कोई कमी है या क्या इसमें और ऐड करना है। तो थैंक यू वेरी मच। तो चलिए मैं अब आपको सीधा ले चलता हूँ जजमेंट की तरफ। और ये जो है जजमेंट जैसे कि आपको दिख पा रही है ऑन स्क्रीन इस जजमेंट में जो है पैरा 2 में जो लिखा गया है, द प्रेजेंट पटिशन हैव बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 482 CRPC फॉर क्वेश्चनिंग ऑफ द क्रिमिनल कंप्लेंट नंबर सो एंड सो अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, summoning order dated so and so, passed by the court of judicial magistrate so and so, the accusation order dated so and so, along with all consequent proceedings arising therefrom। इसमें जो है सारे ही जो समनिंग ऑर्डर से लेकर जो भी प्रोसीडिंग्स थी 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो थी, वो सारे को क्वेश्चन करने के लिए की गई। इसमें ग्राउंड क्या थे और इसमें क्या फैक्ट्स थे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें जो है चेक था वो 2 बारी प्रेजेंट किया गया था बैंक के पास। द सेड चेक वॉज डिसऑनर्ड ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट देयर वॉज मटीरियल अल्टरेशन इन द चेक एंड इट रिक्वायर्ड द फुल सिग्नेचर्स ऑफ द ड्रॉवर। Thereafter it was presented once again, and the reason for the subsequent dishonor was that the account had been closed. It may be mentioned here that only the subsequent dishonor is spoken of in the complaint. In fact, ये चेक 2 बारी डिसऑनर हुआ था। फर्स्ट टाइम तो इसलिए हुआ था कि देयर इज मटीरियल अल्ट्रेशन जो है हुई है, उसमें चेंज हुआ है, चेक में कोई काट पीट हुई है, कटिंग हुई है। और फिर उसके बाद सेकंड टाइम लगाया तो उसके बाद जो है इसलिए डिसऑनर हुआ कि अकाउंट क्लोज हो गया है। लेकिन जो कंप्लेंट की उसमें जो है मेंशन सिर्फ सेकंड टाइम कर दिया, फर्स्ट टाइम का जो है बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। और जो इसमें चैलेंज जो था, उसका जो रीजन फॉर चैलेंज था वो था पैरा 5 में, वो वो था कि द अफोर मेंशन कंप्लेंट समनिंग ऑर्डर था, नोटिस ऑफ एक्यूजेशन अलोंग विद सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स आर अंडर चैलेंज इन दीज पिटीशंस। और इसमें जो आरबीआई की गाइडलाइंस है उसको काफी एलोबरेटली इसमें डिस्कस किया गया, कोट भी किया गया है पैरा 5 में। द मेन कंटेंशन रेज्ड बाय द लर्नर काउंसिल फॉर द पिटिशनर इज दैट देयर इज मटीरियल अल्टरेशन and interpolation in the check which was in contravention of the RBI guidelines। वो अल्टरेशन क्या हुई थी? The signatures of Sudha Mittal, petitioner so and so at 4 places are different. The name of the beneficiary has been changed, altered after making overwriting cuttings। और जो इसमें विटनेस थे बैंक के क्लर्क ऑफ द बैंक has stated in his cross examination that the check had been returned dishonored for the first time on account of cancellation alteration in the check, and the name require the full signature of the drawer. As per the report dated so and so of the handwriting expert, the check in question was forged and fabricated. It is therefore the case of the petitioner that as the check was forged and fabricated, no offence under section 138 was made out। सिग्नेचर्स में जो अल्टरेशन थी, और इसके बाद जो है फर्दर जो इसमें डिस्कस हुआ है वो जो है सेक्शन 87 का बेस बनाया गया। इसमें बेसिकली सेक्शन 87 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट रीड्स एज अंडर इफेक्ट ऑफ मटीरियल अल्टरेशन। Any material alteration of the negotiable instrument renders the same void as against anyone who is party thereto at the time of making such alteration and does not consent thereto unless it was made in order to carry out the common intention of the original parties। और जो इसमें केस लॉ जो इसमें लाइक किया गया है साइट इस पॉइंट पे जो लाइक किया गया वो ये है, इन श्रीमती वीना सिंगल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर सो एंड सो वेयर द थाउस हैज बीन चेंज टू लैक्स, यानी कि 1000 लिखा हुआ और उसको लैक्स में अल्टरेशन कर दी थी, विदाउट अ काउंटर साइन
of the executant of the check, the court quashed proceedings holding that the cutting amounted to material alteration and was violative of RBI guidelines. An SLP number so is pending before the Honorable Supreme Court titled as Sanjay Kumar Gupta versus so and so. The relevant paragraph ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो है Honorable Apex Court की जो है observations है. At the time of argument, learned counsel for the applicant has mainly emphasized 3 points: that the check in question is not a legally enforceable instrument in the light of guidelines issued by the RBI dated so and so, clause 9 of which prohibits changes, corrections in the check. The said guidelines have been affirmed in Central Bank of India versus Windows so and so, and also in Fragrant Leasing versus Finance Company so and so. Clause 9 of the said guidelines as follows: RBI has made specific provision under the power conferred to them in Payment and Settlement System Act 2007, which reads as: no changes, corrections should be carried out on check other than for date validation purpose if required, for any check in the pay's name, courtesy amount in figure, and the legal amount in words, fresh check from should be used by the customers. This should help banks to identify and control fraudulent transactions. क्योंकि बहुत सारे इस तरह के ट्रांजेक्शन होते होंगे फ्रॉडलेंट, तो इसी को कर्टेल करने के लिए जो आरबीआई ने ये डायरेक्शन दी थी. फिर पैरा 12 में इसी जजमेंट में जो है ऑनरेबल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है: कमिंग बैक टू द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस, द कंप्लेंट डज नॉट डिस्क्लोज दैट द चेक वाज materially altered or that it was dishonored first time due to the material alteration, or as to how and at what stage did Sudha Mittal purportedly countersign the material alteration. A perusal of the CTS check would reveal cutting on the name of the beneficiary and the amount in verse. There appears to be an overwriting on the amount in figures as well. Therefore, in terms of the RBI guidelines dated 22nd February 2010, which have statutory force read with Section 87 of the Negotiable Instruments Act, the check was not valid tender and could never have been presented for encashment, even assuming that the material alterations were signed by Sudha Mittal and assuming that she was competent to sign the same despite the fact that she was not an executant of the check. A combined reading of the RBI guidelines along with Section 87 of the Negotiable Instruments Act would show that the only permissible material alteration is on the date of the check, which must also be signed by the executant drawer of the check, namely Sachin Mittal. Further, a perusal of the Section 27 of the Negotiable Instrument Act would show that Sudha Mittal purportedly acting as an agent was not conferred with the power of accepting or endorsing bills as to bind the principal, that is Sachin Mittal. और अल्टीमेटली जो है डिसीजन इसमें ये हुआ कि कीपिंग इन व्यू द अफोरमेंशन्ड डिस्कशन, the continuation of the proceedings in the present case would be nothing but an abuse of the process of the court. Therefore, the complaint number so and so, summoning order dated so and so, the notice of acquisition dated so and so, and all subsequent proceedings arising therefrom are hereby quashed qua all the accused. ये जो जजमेंट है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सिंह बेदी जी की है और ये 16 जनवरी 2023 इसी साल की ये जजमेंट आई है. और इसका जो मेन टाइटल है ऑनरेबल ये इन दी हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, और जो मेन जो टाइटल है इसका अनिल एग्रो इंडस्ट्रीज वर्सेस बॉडी स्टील रोलिंग. तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो है ये काफ़ी यूजफुल जजमेंट साबित होगी, और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.